So this is a programming model, okay, ARM core data flow model. Okay, now before I start with this, let me tell you what do you mean by core. Okay, because many times when you go through the textbook, you will encounter with these words, ARM core, or what do you mean by the engine. Okay, so there are interchangeable, these are the interchangeable words. So what do you mean by core and what do you mean by engine, we will try to see. Now, when you talk about the ARM core, it is nothing but it is an engine within the system. Okay, you take any system. Okay, that system comprises of your main core. Okay, that is your ARM core. Along with the main core, we have peripheral devices in a system. So your system comprises of what? Your main core and the peripheral devices. So when you talk about this core, it is nothing but an engine within the system. Okay, and this core is responsible for what? The main function of this core is to fetch the instruction from the memory and execute them. Okay, I'm repeating. What is the main function of this core? ARM core. The main function is to fetch the instruction from the memory and execute them. Okay. Now, actually, this ARM core is very small. The size of this core is very small, and when this core is small, when you see the entire system, in that case, we can use the other peripheral devices or other areas for additional components. Okay, that means अगर आपका कोर जो मेन कोर है वो अगर स्मॉल साइज में है, तो इन अ सिस्टम वी कैन अकोमोडेट सम एडिशनल कंपोनेंट्स. ओके, बिकॉज आपके सिस्टम में जो काम होता है दैट इज द मेन फंक्शन इज ऑफ द कोर, एंड अलॉन्ग विद द कोर सम एडिशनल कंपोनेंट्स और सम पेरिफेरल डिवाइस. ओके, तो जितना आपका कोर छोटा है, जितना आपका इंजन छोटा है, उतना आप ज्यादा एडिशनल कंपोनेंट्स सिस्टम में लगा सकते हो. दैट इज द मीनिंग. ओके, so when we this core is why we have to study this core, because if I have to design any system, okay, if I have to design any system, then the selection of the core is important. Okay, कि मुझे कोर कौन सा सिलेक्ट करना है, कोर में क्या क्या होना चाहिए. Okay, so that is more important, and that depends upon the designing aspect or the application of a system. आप वो सिस्टम को क्या हिसाब से डिजाइन कर रहे हो, what is the motive of designing the system, what is an application area to design the system. So if you consider everything, then after we take into consideration of the application of the system, then the next part comes the designing of a core. Depending upon that, you will design a core. Okay, तो जो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे दिख रहा है, that is the core, that is the main core, or that is the main engine. Okay, with slight changes you can modify the core depending upon your requirement, depending upon your application, depending upon if you are a designer and if you have to design a system. Okay, then depending upon that designing of a system, you will change the core, the ARM core. Okay, that is the main aspect of this. Now, if you see on your screen, you'll be seeing this data core or core data flow model. Okay, ARM core data flow model. Now there are different interchangeable words. You can say ARM architecture, you can say programming model, you can say data flow model, you can say ARM core data flow model, you can say block diagram. Whatever is asked, the figure remains the same. The figure remains the same. Okay, so we are going to study this in detail now. Okay, so I want everyone to pay attention. This is important. Mostly the questions are asked. अगर आपको कोर समझ में आया, then you will be able to understand the entire flow of processing of the data. Okay, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोर का क्या इम्पोर्टेंस है. द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर इज टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. आपको पता है कि आपके इंस्ट्रक्शंस ऑपकोड सब रॉम में होते हैं. ओके, आपके मेमोरी में होते हैं. तो हम जब भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी. ओके, फॉर एग्जांपल ARM 7 में आपके 3 स्टेज पाइपलाइन में आप क्या करते हो? वी फेच, वी डिकोड एंड वी एग्जीक्यूट. We fetch, we decode, and we execute. Okay, that is how the process goes on. Okay, depending upon how many instruction you have, or depending upon the size of your program. Okay, because the group of instructions make a program. The group of instructions make a program. So you will be executing one by one instructions, so that as a whole you will execute the program. Okay, that is the main intention of understanding this code.
Now, if you see this block diagram, okay, we will see understand the block diagram now. So this block diagram can be well understood if you go into the sequence. Okay, so we will go one by one. So first we will see this part. We will see this part. This is called as a data bus. This is called as a data bus. Okay, this is called as a data bus. Now, whenever the data is coming into the core, that will come through the data. Okay, that will come through the data. Now, if I talk about this particular core, it follows von Neumann architecture. It follows von Neumann architecture. Neumann architecture. Can anyone of you tell me what is von Neumann architecture? या फिर मुझे आप कोई बता सकते हो कि डेटा मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस करने के लिए do we have separate data bus or address bus, or do we have the same data bus and address bus? सर सेपरेट data bus. Yes. So for one सर दो मेमोरी रहते हैं इसमें. हाँ, yes. So I have to tell you this concept. Yes. So if this is my data, program memory, and this is my data memory. This is my data memory. Okay, and this is you can treat this as your ARM microcontroller. Okay, now to access my program memory, you will have the data bus. You will have a data bus. To access my data memory, you have a data bus. Now they are separate. Okay, as well as to access my program memory, you have a address bus. And to access my data memory, you have a separate address bus. Yani at a time, data can be moved from program memory towards the ARM, or at the same time from data memory towards the ARM, and vice versa. Okay, so this is my data bus. This is my address bus. This is my address bus, and this is my data bus. So this concept is not new to all of you. This already we have studied. This is a von Neumann architecture. So your ARM core data flow model supports von Neumann architecture. That means you have separate data bus, address bus to access your program memory as well as data memory. That is the mean. Okay, so come to this point. So whenever you talk about the data bus, if you have to fetch the instruction from the memory, you will have the separate data bus, and if you have to take the data from the data memory, you have the separate data bus. Okay, so there are data bus. Now this data bus is split into three buses. Actually not three buses, but उनको अलग अलग नाम दिया है. So I want everyone to pay attention. What are they? A bus, A bus, A bus. A bus is also called as RM. So you have A bus, that is also called as RN. Remember this. Okay, RN. That is associated with the register. That is why RN. Then you have B bus. So B bus is associated with RM. These are the nomenclature. RM stands for register. Okay, so that is the nomenclature given as RM for B bus, and RN is the nomenclature given for A bus. So we have A bus, we have B bus. Okay, then we also have C bus. So if you see here, you are not able to see the C bus. Okay, but I will write down C bus kahan pe hai. C bus is here. C bus is here. So this C bus is also called as, the nomenclature is RD. So RD stands for destination register. RD stands for destination register. Okay, so we have seen three types of register now. One is called as RD, as a destination register. RN and RM, you can treat them as a source register. So there are two source registers, RN given by RN and RM, and there is one destination register given by RD.
Two source registers Rn is also called as will go through the A bus. Second source register is called as Rm, that will go through the B bus, and the ultimate result will go through the C bus. So can I say the C bus is nothing but that will have a result? So can you see here? Can you see here? So this bus is also called as C bus, or you can say it is a result. Actually, the result. It is a result which will be generated, and that result is given by the nomenclature as RD. That is a destination register. Okay, destination register. So here we can say, by in other words, you can say this Rn as operand one, operand one. Rm is also said as operand two. It is said as operand two. Okay, and RD is called as a destination register. Okay, it is called as a destination register. Okay, so for example, if I have to add 1 and 2, अगर दोनों को मुझे ऐड करना है, ओके, और रिजल्ट मुझे सपोज आरडी में स्टोर करना है, so 1 is called as the first operand, that will be in Rn. Second operand, that is number 2, will be stored into the register Rm, and after you do the addition over this register Rn and Rm, the result which will be generated will be stored into RD. Okay, so I would say the instruction which will require to add 1 plus 2 and storing the result into the destination register, that will carry out in a single instruction. मैं अभी वो instruction नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे 1 और 2 को ऐड करना है, तो 1 एक ऑपरेंड में जाएगा जिसका नाम है Rn, 2 एक ऑपरेंड में जाएगा उसका नाम है Rm, और दोनों का एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है वो जाएगा Rd में. ये सब करने को एक ही इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड इन आर्म इंस्ट्रक्शन. ओके, ये इंस्ट्रक्शन में अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन right now. So just try to understand, to do all these operations, I would require only single instruction. And the single instruction is called as 3-operand instruction. 3-operand instruction. 3-operand instruction. Now, why it is called as a 3-operand instruction? Because in the same instruction, you are using Rn, you are using Rm, and same you are using RD. ये अब तक हमने 8051 में भी देखा नहीं है. अगर मुझे ये अगर मुझे ये ऑपरेशन करना पड़ता था 8051 में, आई वुड रिक्वायर 2 इंस्ट्रक्शन. एक इंस्ट्रक्शन में काम नहीं होता था, मुझे 2 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते थे, या फिर आप जनरल बोलो, मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन वुड रिक्वायर टू डू दिस सेम ऑपरेशन. लेकिन वही ऑपरेशन मुझे अगर आर्म में करना है, तो आई वुड रिक्वायर अ सिंगल इंस्ट्रक्शन. That is how powerful ARM is. Okay, that is how powerful the ARM is. Okay, so what I mean to say that the single instruction would do all these operations. And why these instructions are called as a 3-operand instruction? This is very important. 3-operand instruction क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही इंस्ट्रक्शन में हम Rn भी यूज कर रहे हैं, Rm भी यूज कर रहे हैं, और रिजल्ट Rd में भी स्टोर कर रहे हैं. तो Rd, Rn and Rm, ये तीनों ऑपरेंड हम यूज कर रहे हैं. That is why it is called as a 3-operand instruction. I hope this is clear. Okay, so come to this point. So as I have told you, there are 3 buses. One is called as A bus, given as Rn, that is operand 1. We have B bus given as Rm, that is operand 2, and the result which will be generated, that will be through the C bus, which is the result as well as, and that is the nomenclature of that particular, या फिर वो result कहाँ पे जाता है? It goes into the RD, that is destination register. Okay, so that is all about your data bus. Now come to the next point. We will go one by one. Then we will go to this MAC.
तो हमने पहले डेटा देख लिया. Now we will proceed to the next one. The next one is your Mac and ALU. Mac and ALU. Now try to understand, this is very too important, the blocks. Okay. As I have told you that your ARM instruction is of 3 operand. 3 operand क्यों कहा जाता है, that is also I have told you. Okay. Now अगर मुझे ये 3 operand है, so I have two input operands, or I am using 2 input operand registers which are RM and RL. So can I say these are the 2 input operands? Can I say these are the 2 input operand registers RM and RL? Yes. Okay. Now if you take an example of ALU, आपको पता है कि ALU में arithmetic and logical operations होते हैं. And what is this MAC? MAC stands for multiply accumulate unit. Multiply accumulate unit. In short, it is given as MAC. It is given as MAC. जैसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ALU, वैसे मैक को बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट यूनिट. So whatever the multiplication operations are done, that we have a separate block that is done in the multiply accumulate unit. And other than that, whatever the arithmetic and logical operations we do, that we do in the ALU block. Now see here carefully. Now in this, अगर ALU में कुछ ऑपरेशन करना है, okay, if you see carefully, there are 2 arrows coming. There are 2 arrows which are coming. Okay. Now एक arrow is coming from RN. One arrow is coming from RN, and the second arrow actually comes from RM, but through barrel shifter. Now we will see what is the function of this barrel shifter. Okay. मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 इनपुट ऑपरेंड है, RM और RN. RN तो इधर से आ रहा है डायरेक्टली ALU में, लेकिन अगर दूसरा ऑपरेंड जो है वो RM जो है, ओके, वो डायरेक्टली ALU में नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग थ्रू द बैरल शिफ्टर. इसका मतलब है अगर एक ऑपरेंड में, ये जो RM का जो ऑपरेंड है, अगर ये इस पे ALU ऑपरेशन के करने के पहले अगर मुझे कुछ शिफ्टिंग ऑपरेशन करना है, ओके, सो अ वाइड रेंज ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन आर पॉसिबल यूजिंग द बैरल शिफ्टर. हम लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट, लेफ्ट रोटेट, राइट रोटेट, जो कुछ शिफ्टिंग ऑपरेशन करना है वो हम RM पे कर सकते हैं बिफोर आई गिव इट टू द ALU. So that is why can you see here that RM is going into the ALU through the barrel shifter. And what is the function of the barrel shifter? The barrel shifter is used to perform different pre-processing on the RM operand. सिर्फ RM पे ही कर सकता है क्योंकि RN मेरा डायरेक्ट जा रहा है ALU में, RN मेरा डायरेक्ट जा रहा है ALU में. तो दूसरे ऑपरेंड में अगर जो भी मुझे कुछ प्री प्रोसेसिंग करना है, प्री प्रोसेसिंग मीन्स whatever shifting operation, whatever left shift, right shift, rotate, जो कुछ करना है तो वो मैं कर सकता हूँ बैरल शिफ्टर के थ्रू, और वो होने के बाद मैं वो ALU को दे सकता हूँ. तो मेरे ALU में RN डायरेक्टली आएगा और दूसरा जो RM है वो बैरल शिफ्टर के थ्रू आएगा. So that is the beauty of this ARM core, that one of the operand I can do pre-processing using barrel shifter, Okay. So that is the meaning of this. And if you see properly, ये तो मैंने ALU के बारे में बताया, वही अगर मैं मैक के बारे में बताऊंगा, आपके मैक के भी इनपुट देखो क्या है. आपका एक है डायरेक्टली जो RN से आ रहा है, दूसरा जो है वो RM से आ रहा है, तीसरा जो है वो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर. तो हम 3 ऑपरेंड्स डायरेक्टली मैक में दे सकते हैं. सिर्फ यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कि हम बैरल शिफ्टर के थ्रू नहीं करेंगे, बिकॉज ALU ऑपरेशन के करने के पहले हम बैरल शिफ्टर के थ्रू कर सकते हैं, बट मैक इट इज नॉट पॉसिबल. सो द इनपुट टू द मैक इज RN, RM एंड एक्यूमुलेटर. ये तीनों पे हम मैक में यूज कर सकते हैं. एंड इफ यू सी प्रॉपरली,
ALU का आउटपुट और मैक का आउटपुट इज गिवन थ्रू द सी बस, जो मैंने पहले बताया था, एंड दैट इज नथिंग बट योर रिजल्ट, और दैट इज थ्रू द डेस्टिनेशन रजिस्टर, दैट इज थ्रू द डेस्टिनेशन रजिस्टर। ओके, दूसरी बात, आपका RN कहाँ से आ रहा है, आपका RM कहाँ से आ रहा है, और आपका रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका RN कहाँ से आ रहा है, आपका RM कहाँ से आ रहा है, और आपका RD कहाँ जा रहा है। ये सब जा रहा है रजिस्टर फाइल में, ये सब जा रहा है रजिस्टर फाइल में। ओके, यानी हम जो भी रजिस्टर यूज करेंगे वो रजिस्टर फाइल में से यूज करेंगे। सो व्हाट डू मीन बाय रजिस्टर फाइल? रजिस्टर फाइल इज द बैंक, इट इज अ बैंक। कौन कौन से रजिस्टर्स है वहां पे, कौन कौन से रजिस्टर्स है वहां पे? कैन यू सी, यू हैव R0 to R15, you have R0 to R15. Now go back to the different operating modes. वहां पे हमने देखा था R0 से लेके R15, तो ये सब रजिस्टर्स ये रजिस्टर फाइल में रहेंगे, ये सब रजिस्टर्स ये रजिस्टर फाइल में रहेंगे। और रजिस्टर का क्या यूज है? टू स्टोर द डेटा। और रजिस्टर का साइज कितना है? 32 बिट। रजिस्टर का साइज कितना है? 32 बिट। ओके, एंड इट इज यूज टू स्टोर द डेटा। और ये रजिस्टर फाइल में से मैंने एक रजिस्टर यूज किया है RN, दूसरा रजिस्टर यूज किया है RM। ओके, RN एंड RM दीज आर इन जनरल, लेकिन आप R0 से लेके R15 कौन सा भी रजिस्टर यूज कर सकते हो। ओके, बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि हम R13, R14 और R15 यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा R0 से R12 आप कौन सा भी यूज कर सकते हो, और डेस्टिनेशन रजिस्टर आप RD कौन सा भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दीज रजिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम द रजिस्टर फाइल। Okay, that is from R0 to R15, so it is called as a register bank, it is called as a register bank. Okay, so I hope you have understood the parallel shifter, you have understood the ALU, you have understood the MAC, you have understood the RM, you have understood the RN, you have understood the RD, you have understood A bus, you have understood B bus, and you have understood C bus. Okay, so we will proceed further. So we have done with this. Yes, now instruction decoder. So this word is also not new to you. Already we have studied this word in 8051. So what is this instruction decoder doing? This instruction decoder will decode the instruction. This instruction decoder will decode the instruction of code from where? From the memory. From the memory. Okay. And then memory से read होने के बाद, वो decode होने के बाद execute होता है, वो execute होता है, क्योंकि आपको पता है fetching होता है memory में से, फेचिंग होने के बाद डिकोड करना पड़ता है उसको। तो ये जो डिकोड हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। और एक बार हमने डिकोड कर लिया, बाद में हमारा क्या काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन डिकोडर? इट इज यूज्ड टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड फ्रॉम द मेमोरी, एंड देन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड फाइनली, एंड द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड फाइनली। ओके, तो वो इंस्ट्रक्शन जो हमने एनकोड करके रखा है प्रोग्राम मेमोरी में, वो वहां से फेच करना मेमोरी में से, और फेच करने के बाद वो उसका क्या मतलब है, उसको डिकोड करना, और डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट करना। ये सब इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन डिकोडर। Then comes sign extend. This is also important. What do you mean by sign extend? We will see. Now sign extend is a concept. Now you know the size of your register is of 32 bit. The size of your register is of 32 bit. But sometimes it happens that data size may be of 16 bit or maybe of 8 bit. Maybe of 16 bit or maybe of 8 bit. So in that time, your sign extend is important. Okay. So some of the instructions require signed value. Okay, signed value. इसका मतलब क्या होता है कि if I'm having 16 bit of data, it should be elongated to 32 bit. Okay, so there is a sign extend. So this 16 bit will be converted into 32 bit. Similarly, this 8 bit will be converted into 32 bit. Okay, so I have to extend the sign. Okay, so that is the hardware part which will actually convert the number to 32 bit value. Okay, so this sign extend is actually a hardware which will convert your 16 bit into 32 bit, which will convert your 8 bit into 32 bit. Okay, because you will be dealing with 32 bit only, because the register ka size bhi 32 bit hai, instruction execution will be also 32 bit,
That's why if the data is of 16 or 8 bit, it has to be sign extended into 32 bit. So that is through the hardware. That is done through the hardware. Okay. और वो data is stored into the register file. Can you see the arrow? So whatever the data I am taking, if it is 32 bit, it is fine. If it is not 32 bit, if it is less than that, you have to go through the hardware of sign extension, where the number will be converted into 32 bit. Then it will be given into the register file. Then it will be given to the register file. Okay. So that is the function of the sign extend. That is the function of the sign extend. Okay. So we have done with the 8 minute. So we have done with the instruction decoder, MAC, barrel shifter, ALU, register file, sign extend, RD, okay, AB accumulator, RN, RM, okay. Yes, then we have address bus. Then we have an address bus. Okay, so this address bus is simple. Okay, so if you have to take the data from the memory, okay, then we need to know the address. So that is given through the address bus. And if I have to fetch the instruction from the program memory, then also I have to know the address. Okay, so everything, all the addresses will be given through the address bus. That is the mean. Okay, and this address bus में जाने के पहले you have an address register which will store your address. So your address register का क्या काम है? Your address register will is responsible to store the addresses. Is responsible to store the addresses. The addresses of the memory location जहाँ से मुझे instruction को fetch करना है या फिर जहाँ से मुझे data लेना है. So these are all available in the address register. This is all available in the address register. और वो address register वो address को increment करने का काम, you have a different block which is called as an incrementer. Because you know कि एक address से दूसरा address, so you have to increment your address. वो increment करने का काम, you have a block which will increment your address register. Which will increment your address register. Depending upon your requirement कि आपको data कहाँ से लेना है, आपको instruction कहाँ से fetch करना है. So for in both the cases you require the address, and to increment those addresses you require the incrementer. Okay, so that is the way to understand what do you mean by increment. Okay. So I think I have covered many of the things. Okay, यहाँ पे और एक चीज है. Yes, यहाँ पे और एक चीज है. You can see R15, that is the program counter. So program counter is given to the address. Why it is given to the address? Because you know program counter is responsible to fetch the address of the next instruction which has to be executed. तो हमेशा प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करना पड़ता है. प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है? एड्रेस होते हैं कि जो कौन से एड्रेस होते हैं जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमको एग्जीक्यूट करना होता है, इसलिए दैट इज गिवन सेपरेटली टू द एड्रेस. ओके, सो R15 वो कहाँ से आ रहा है? वो रजिस्टर फाइल में से आ रहा है. तो दिस इज अ बैंक ऑफ रजिस्टर. वो कहाँ से आ रहा है? रजिस्टर फाइल में से आ रहा है. ओके, सो R15 is treated as a separate entity, that is why it is given to the address bus. Okay, so I hope I have covered each and every block. I have explained you each and every concept of the ARM core data flow model. If you have any questions, please let me know so that I can clear it right now. Otherwise, I can proceed further. Yes. Is it fine to everyone? Yes, sir. Do you want me to explain any of this concept once again? Or is it fine to everyone so that I can proceed further? Is it fine? Yes, sir. Okay. So we can proceed further now.
So mostly the questions are asked on this. This is very important. Do not neglect this portion. Okay, data flow model. This is important. Okay, so that was about the data flow model. Okay, now we will be talking about yes, this one. This one was left. So I want everyone to write down this. This is important. मैंने बताया था. This was in association with the CP program status word or program status register. Program status register. So if you remember, I have told you in the program status register, the first 5 bits are dedicated for mode bits. They are called as the mode bits. ये आपको बिट्स बताते हैं कि हम कौन से ऑपरेटिंग मोड में काम कर रहे हैं या फिर हम कौन से मोड में. Okay, so I want everyone to write down this. Okay, it is available in all the textbook, but then also please see that user mode में अगर मैं है तो it is 1000. Already I have told you. FIQ में अगर है तो 10001. IRQ में अगर है तो 10010. सुपरवाइजरी मोड में अगर हम है तो 10011. अबॉर्ट मोड में अगर हम है तो 10111. अनडिफाइंड मोड में अगर है तो 11011. और अगर 60 मोड में है तो it is all 1. 5 times 1. Okay, so you never know, the question can be asked on this. The MCQ question can be asked on this. Okay, so you should know this by heart कि हम abort mode में है तो what could be the bits. Okay, so this is the table to just give you the understanding कि mode bits में हम कौन कौन से. सबने लिखा है ये? So 1 minute. Okay, right on. Done, sir. Okay, now we will proceed to the next one. Yes, you write down the heading. This is also important. You can write down the heading as exception vectors. I want everyone to write down the heading as exception vectors. This is also important. Write down exception vectors और ब्रैकेट में लिखो उसके सामने the vector table. Vector table. Write down few sentences on this, then I will explain you. Please write down the exception vector table consists of designated addresses in external memory आपने क्या लिखा है? The exception vector table consists of designated addresses in external memory that hold information necessary to handle an exception. Each and every word is important. Okay, but I'm repeating again. The exception vector table consists of designated addresses in external memory that hold information necessary to handle an exception, comma, an interrupt,
necessary to handle an exception, comma, an interrupt, comma, or other atypical event such as a reset, or other atypical event such as a reset, or other atypical event such as a reset. Full stop. For example, this right now. For example, when an interrupt ब्रैकेट में लिखो IRQ, when an interrupt ब्रैकेट में लिखो IRQ ब्रैकेट क्लोज comes along, comma, the processor will change the program counter to, the processor will change the program counter to, the processor will change the program counter to, see on the screen, will change the program counter to 0x 1 2 3 4 6 times 0 18. We'll change the program counter to 0x 6 times 0 18 and continue write down in continuation and begin fetching instructions from there, okay. Now stop writing and listen now. This is important, you should know this. So as I have told you that whenever you go from user mode, and whenever you have an exception, or whenever you have an interrupt, or whenever you have an atypical event like reset, यही मैंने आपको लिख के दिया है, okay. So normally by default you are in the user mode, लेकिन अगर कोई इंटरप्ट आता है या फिर कोई एक्सेप्शन आता है या फिर कोई atypical event आता है जैसे reset, then you go from user mode to that particular exception mode, okay. तो एक्चुअली हम जब वो मोड में जाते हैं तो it is like your program counter will be updated with some address, and that address is called as a vector address. For example, see on the screen, अगर reset हो गया तो आपका program counter जो भी वैल्यू थी पहले वो डायरेक्ट जंप करेगा कहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ओके. सपोज अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन आ गया, सपोज अब यूजर मोड में हो और अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन आ गया तो आपका प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे जंप करेगा, डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ पे 0x 7 times 04, 0x 7 times 04. वैसे ही अगर एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आ गया तो आपका प्रोग्राम काउंटर कहाँ जंप करेगा, आपका प्रोग्राम काउंटर डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेगा 0x 7 times 08, ओके. और आपको जैसे मैंने एग्जांपल लिख के दिया था, सपोज IRQ इंटरप्ट आता है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर डायरेक्टली कहाँ जंप करेगा, ये एड्रेस पे जंप करेगा. सो दीज आर कॉल्ड एज वेक्टर एड्रेसेस and this concept is not new to you all. Already we have studied this in 8051. आपको पता है 8051 में we have total 5 interrupts. 2 are internal interrupts and 3 are external interrupts. और वहाँ पे भी हमने वेक्टर टेबल लर्न किया था. हमने देखा था कि अगर इंटरप्ट आता है तो आपका प्रोग्राम काउंटर कहाँ पे जंप करता है, तो जहाँ पे जंप करता है वो होता है वेक्टर एड्रेस. और वेक्टर एड्रेस ये जो है यहाँ पे एक्चुअली आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं. इसका मतलब क्या है, सपोज रिसेट आ गया तो आपके प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि रिसेट होने के बाद क्या करना है. तो वो जो कुछ करना है वो इंस्ट्रक्शन ये एड्रेस से लिखे रहते हैं. So this is very important. बहुत कम लोगों को समझ में आता है कंसेप्ट. So please understand this. Again I am repeating.
अगर रीसेट आ गया, ओके, या फिर छोड़ दो, रीसेट छोड़ दो, अगर IRQ इंटरप्ट आ गया, ओके, तो आपके प्रोसेसर को पता होना चाहिए कि IRQ इंटरप्ट होने के बाद उसको क्या क्या करना है। तो जो कुछ करना है वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लिखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस ये एड्रेस के दोज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन फ्रॉम दिस एड्रेसेस। क्या एड्रेस है वो? 0x6x018। तो जो प्रोसेसर को जो कुछ काम करना पड़ता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरप्ट हैंडलर, okay, so that interrupt handler that resides somewhere in the memory. So तो यानी इंटरप्ट हैंडल करने के लिए जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वो ये एड्रेस के स्टार्टिंग एड्रेस पे लिखे रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज इंटरप्ट हैंडलर। तो प्रोसेसर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी ये इंटरप्ट आया तो मुझे क्या करना है, रीसेट हो गया तो मुझे क्या करना है, अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन आया तो मुझे क्या करना है। प्रोसेसर को शुड नॉट बी इन अ कंफ्यूजन स्टेट। तो प्रोसेसर को पता है कि हाँ बा, मुझे अगर IRQ इंटरप्ट आया है तो मुझे ये एड्रेस लोकेशन पे जाना है, और ये एड्रेस लोकेशन के वहां से कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो मुझे एग्जीक्यूट करने, खत्म। So these addresses are called as vector addresses. और जो instructions from the interrupt handler, okay, the instructions for the interrupt handler that reside somewhere in the memory, ठीक है, वो इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, ये जो एड्रेसेस है, these are the addresses somewhere in the memory और somewhere in the external memory। आपने भी वही सेंटेंस में वही लिखा है, इट इज समवेयर इन द एक्सटर्नल मेमोरी। तो ये जो एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, दीज आर द एड्रेसेस ऑफ द एक्सटर्नल मेमोरी, और जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते टू हैंडल योर इंटरप्ट्स, ओके। दूसरी बात, इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन टाइप्स। तो आपको पता है यूजर और सिस्टम छोड़ के बाकी के सब मेरे एक्सेप्शन टाइप्स है। अगेन आई एम सेइंग, यूजर और सिस्टम मोड छोड़ के सभी एक्सेप्शन टाइप्स है। तो ये दो छोड़ के आपको सभी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रीसेट देखने को मिल रहा है, आपको अनडिफाइंड इंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, आपको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट देखने को मिल रहा है। अब दूसरी और एक बात है, यहाँ पे अबॉर्ट जो है ना, ये दो टाइप के, एक है प्रीफेच अबॉर्ट, दूसरा है डेटा अबॉर्ट। हम जब इंस्ट्रक्शन मोड्स पढ़ रहे थे तो मैंने एक ही आपको मोड बताया था, वो था अबॉर्ट। और मैंने अबॉर्ट के बारे में क्या बताया था कि अगर मैं कुछ मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, तब मैं देन आई विल हैव दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट दैट इज कॉल्ड एज अबॉर्ट इंटरप्ट। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे दो टाइप के अबॉर्ट इंटरप्ट है। वो कौन से? एक है प्रीफेच अबॉर्ट, आगे देखो क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन फेच मेमोरी अबॉर्ट। अगर मैं इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा हूँ ऐसे मेमोरी में से जो फिजिकली ही प्रेजेंट नहीं है, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रीफेच अबॉर्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इट इज अ डेटा अबॉर्ट। डेटा अबॉर्ट मीन्स डेटा एक्सेस मेमोरी अबॉर्ट, यानी मैं ऐसे डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ ऐसे मेमोरी में से जो फिजिकली ही प्रेजेंट नहीं है। So there are two concepts: accessing the data from the memory and accessing the instruction from the memory. Accessing the data from the data memory, accessing the instruction from the program memory. Okay? तो अगर हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं ऐसे मेमोरी में से जो नहीं है, या फिर हम ऐसे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं ऐसे मेमोरी में से जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, for that we have two types, that is called as a prefetch abort and the other one is called as a data abort. Okay, so ये दोनों को क्लब करके हम डायरेक्ट एक abort मोड ही बोल सकते हैं। लेकिन अगर if you want a clear vision and if you want a clear understanding, it will be said as a prefetch abort or data abort. Okay, and then you have IRQ and then you have FIQ. Okay, so हमेशा याद रखना कि ये एक्सेप्शन जो टाइप्स है, ओके, 1 2 3 4 5 6 7, उसके वेक्टर एड्रेसेस ये है। और अगर आप प्रॉपरली देखोगे दोनों में कितना डिफरेंस है? 4 बाइट्स, इसमें भी 4,
इसमें भी 4, इसमें भी 4. Okay, then here if you see properly, here we have 8. Okay, and here I think we have 4. Okay, so this is how it is arranged. So you have to by heart this. You have to by heart this. You should know the vector address. कि अगर कोई एक्सेप्शन IRQ आता है तो मुझे कौन से एड्रेस पे जाना है, अगर FIQ आता है तो मुझे कौन से एड्रेस पे जाना है. So these addresses are nothing but vector address. Okay, और ये शॉर्ट फॉर्म है उनके जो ऑलरेडी हमको पता है. SVC, UNDF, SVC. Okay, this SVC is different. This is a software interrupt and this is for reset. Okay, and abort, this is for prefetch abort and this is for data abort. IRQ and FIQ. Okay, so I hope this is clear to everyone. Is it clear to everyone now? The concept Yes, of sir. exception vector. Okay, so I think we can stop here. It's 3:12. Okay, so the next remaining part I will be completing in the coming lectures. Okay, and whatever I'll be completing in this week. Okay, you study that much only. If the questions that will be asked, that will be based upon whatever I have taken till till Friday. Okay, and if you have any questions, any queries, you can ask me on Friday's lecture related with your any query related with your test 2 and about the syllabus. Okay, but already I have cleared what questions will be asked from what syllabus, what are the modules in your syllabus test 2, and whatever I will be completing till Friday. Okay, that much you study for your test 2. Okay, any questions you have? Yes, any questions you have? Any questions, any doubt? Someone has to speak out. No, sir. Okay, so if you don't have any questions, then you can leave. Attendance हो गया क्या? हाँ सर. हो गया ना? ठीक है. So everyone can leave. We will see in the next lecture. Thank you. Sir, I had a doubt. हाँ बोलो. So, in the data flow model, we saw that RM is first given to the barrel shifter. So is it compulsory to use barrel shifter? Like without that, can we not proceed to ALU? That is a good question. It depends upon if you want some pre-processing has to be done on RM, then you can send that through the barrel shifter. But if you do not want any pre-processing should be done, then also it has to be through the barrel shifter. So in that case, the barrel shifter will be passive. It will not do any pre-processing on RM. Okay, but if you want some pre-processing has to be done, that is shifting operation, left shift, right shift, or rotate, then barrel shifter will be active in that case, and it will do some pre-processing before it is given to the AL. Okay, sir. Okay, thank you. Okay. Yes, any questions you have, please ask. Thank you. Okay, take care, bye. Bye sir. Bye.